Hello students, this video is for grade first. So let's start. We will study about three different sections in this sheet: English, EVS and Maths. Okay, we will learn about three different subjects: English, EVS and Maths. So let us start with English. The first section is of English. First question of English is fill in the blanks using verbs. Children want to dash games. In this, what we have to do is we have to fill the blanks using verbs. Verbs का fill help से हमें इन blanks को fill up करना है. So what are verbs? Verbs are action words. Okay, action words को ही हम verb कहते हैं. Doing verb को ही हम verb कहते हैं. Like crying, going, sitting, standing. These are action words, and action words are all known as verbs. Okay, so in this what we have to do is we have to fill the blanks using verbs. Verbs की help से ही हमें इन blanks को fill up करना है. Now children went to play games. Children want to play games. Okay, children want to play games. बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं. want मतलब चाहना. ओके, एंड प्ले. प्ले व्हाट इज इट? इट इज अ वर्ब. क्या है? खेलना एक काम है ना. खेलना एक काम ही तो है. सो इट इज अ वर्ब. चिल्ड्रन वांट टू प्ले गेम्स. गोरिका वांट्स टू eat food. Okay, here a girl whose name is Gorika, she wants to eat food. वो क्या करना चाहती है? खाना खाना चाहती है. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फूड. ईट फूड, या फिर हम कुक भी लिख सकते हैं. वो खाना बनाना चाहती है, वो खाना खाना चाहती है. ओके, वर्ब्स को फिल करके हमें यहाँ पे सेंटेंस को क्रिएट करना है. ओके, Shubham wants to watch television. Shubham wants to watch television. Okay, in this what we have to do? What we will fill? We will fill watch. शुभम क्या करना चाहता है? शुभम टेलीविजन मीन्स टीवी देखना चाहता है. शुभम wants to watch television. Okay, so in this way what we have to do is we have to fill the blanks. इसी तरीके से हम सारे blanks को fill करेंगे. कैसे? verb के help से. Okay, what are verbs? Doing words are called verbs. ओके, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया, किसी भी काम का होना उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ईच वर्ब इन देयर ईडी एंड आईएनजी फॉर्म. यू कैन सी अ फ्यू वर्ब्स आर गिवन हियर. यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं. हमें क्या करना है? इन्हें इनकी ईडी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में राइट करना है. Okay, we have to write these into their ing and ed form. Like jump. Jump का ing form क्या होगा? Jumping. Simply what we will do? We will add these ed and ing. हम क्या करेंगे? इसमें ing और ed ऐड करते जाएंगे. ed और ing फॉर्म बन जाएगा. ओके, लाइक जंप है, जंप का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे. सो व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड आईएनजी. इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे. JUMPING, जंपिंग.
Jumping, jumping. ओके, एंड ईडी फॉर्म, इसमें हम ईडी लगा देंगे, जंप में हम ईडी ऐड कर देंगे, लाइक JUMPED, जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड. ओके, सो दिस इज ईडी फॉर्म, ये इसका ईडी फॉर्म है. ओके, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर गिवन हियर, 2 तरीके के फॉर्म गिवन है ग्रामर में यहाँ पे, ING फॉर्म एंड ED फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. Now, talk. We will add ING, then it will become ING form. Talking. 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 Okay, now ED form, talked. TALKED, talked. TALKED, talked. Now the third word, play. We will convert these into ING and ED form. Play, playing. PLAYING, playing. PLAYING, playing. Played, ED form. PLAYED, played. PLAYED, played. Okay, so in this way you will change these words into their ING and ED form. Now see the next section, which is of maths. The first question of maths is solve the questions given below. In this, what we have to do is we have to subtract these following sums. हमें इसमें subtraction perform करना है. Okay, we have to perform subtraction and then we have to write the answer. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें इनका आंसर राइट करना है. 10 माइनस 0, अगर हम 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? Yes, it will be 10 only. Yes, 10. 5 minus 4, it will be 1. Very good. 5 minus 3 equals to 2. Yes. 7 minus 4 equals to 3. Good. Yes. Okay. So in this way we have to solve these questions. Okay. What we will do, we will subtract these and then we will write the answer. इन्हें हम subtract करेंगे और फिर हम answer write करेंगे. Okay. Now see the fourth question. Second question of maths and fourth question of the sheet. Solve the given questions. In this, again we have to perform subtraction. Okay. We will subtract 6 minus 3. 3. Yes, 6 minus 3 will be equals to 3. 5 minus 4 equals to 1. 5 minus 1, yes, it will be 4. 7 minus 3, 4. Very good. Okay, so in this way you have to solve these subtraction sums. Okay,
you have to perform subtraction and then you have to write the answers. इसी तरीके से आपको इन सारे सम्स को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, इन बोथ द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स यू हैव टू डू द सेम. दोनों ही क्वेश्चंस में मैथ्स के आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है और उनके आंसर राइट करने हैं. यू कैन डू दिस बाय ड्राइंग लाइन्स ऑन एंड बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स. Now, see the last section, which is of EVS. Write the names of your following family members and their occupations. Write the names of your following family members and their occupations. What you have to do in this question, in this, you have to write the names of your family members, okay? Father, you will write your father's name. Mother, you will write your mother's name. Siblings means your sister, brother, they are called your siblings. Okay, you have to write your siblings name. Grandfather, grandmother, okay, उनके name write करना है. And after that, what you will write? You will write their occupations. Okay, occupation means वो क्या काम करते हैं. Okay, occupation means वो क्या करते हैं. मीन्स आपके फादर क्या वर्क करते हैं, आपकी मदर क्या वर्क करती हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं. मीन्स इफ़ योर अगर आपका कोई बड़ा भाई है जो कि वर्क करता है, देन यू कैन राइट दैट ही वर्क्स, या फिर वो क्या काम करता है वो. अगर नहीं, अगर आपका ऐसा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन नहीं है, सो आप व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट स्टडी. ओके, आप उनकी जगह पे वहाँ पे स्टडी राइट कर सकते हो. अगर छोटा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो यू कैन राइट स्टडी. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब क्या करते हैं मीन्स ये आपको यहाँ पर राइट करना है. ओके, मीन्स योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू. आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं. लाइक ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही हैज़ अ स्टोर, और ही वर्क्स एट एन ऑफिस. ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपके फादर क्या करता है, आपकी मदर क्या करती हैं. शी टीचर, डॉक्टर, और शी वर्क्स एट ऑफिस, और शी इज़ अ हाउस वाइफ. ऐसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे शीट इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट वर्ब्स and their ed and ing form, and we have learned about subtractions and family members. Okay, now everyone just repeat with me. We will read the names of family members. Okay, कौन कौन से members होता है family में, हम उनके names एक बार read करेंगे with spelling. Grandfather, G R A N D, grandfather. F A T H E R, grandfather. Grandmother, G R A N D, grandmother. M O T H E R, grandmother. Father, F A T H E R, father. Mother, M O T H E R, mother. M O T H E R, mother. Brother, B R O T H E R, brother. Sister, S I S T E R, sister. Uncle, U N C L E, uncle. Aunt, A U N T,
aunt, cousins, Cousins, cousins. Okay, these were the name of our family members. So I hope you all have understood this sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any section, any subject, you can ask me. Thank you.